This meeting is being recorded. We are going to start the motion graphs topic. And motion graph में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत deep down study करना होगा, because I'm not giving you chills, I'm just giving you reality check. Kinematics is one of those topics which have been misguided and misunderstood a lot of times. Not misunderstood in a way कि गलत समझ लिया जाता है, बल्कि इसको हल्का ले लिया जाता है। काइनेमेटिक्स ओ लेवल में पढ़ा तो था, क्या बच्चों वाला टॉपिक है। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपके 7-7 मिनट 5-5 मिनट ले जाएंगे, इतनी लंबी वर्किंग होती है। तो none of the topic should be taken for granted, और उसको we will do with whole enthusiasm and zeal. चले, so let's see what we are about to do in today's class. So yes, we talked about the motion graph in the previous class, and I just introduced the concept of gradient in the previous class. ठीक है, just recall कर देता हूँ, gradient is basically y2 minus y1 over x2 minus x1. Yes, Afifa, you need to ask something? Ji. Sir, I was just asking to enable the chat and also the mics. Okay. Mics and chat both are open. So, yeah. So, gradient is, Walaikum Assalam, gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. And the straight line has constant gradient throughout. भले मैं ये 2 points के through gradient निकालूं या मैं इन 2 points के through gradient निकालूं, the straight line have constant gradient throughout. ठीक है बेटा? So then I told you a horizontal line has 0 gradient. The vertical line has infinite gradient. And the more rise you have, the more gradient you have. The less rise you have, the less gradient you have. So this is what we talked about in the previous class related to the topic of motion graphs, or we can call the gradient. So आज की class में we have to deal with motion graphs. So there are 3 classes of motion graphs. 1, displacement time graphs. 2, velocity time graphs. 3, acceleration time graph. Okay? And then what I'll do, I'll compare all of them. Like for example, how body at rest can be visualized if you're talking about displacement time graph. How body at rest can be visualized if you're talking about velocity time graph. And similarly, how body at rest can be visualized if you're talking about acceleration time graph. So I'll give you the comparison of each and every graph. Okay? Apart from that, we'll be converting one of the displacement time graph, velocity time graph into acceleration time graph. Okay? And then we'll move ahead. Okay? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले let's talk about the displacement time graph. So the gradient of displacement time graph सबसे पहले निकालते हैं। तो gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. I can write y2 minus y1 as delta y and x2 minus x1 as delta x. So tell me one thing, what is along y-axis? Distance? Displacement. Yes. And what is along x-axis? Time. Time. So displacement upon time is velocity. Velocity. Okay? So that is how we just proved कि
The gradient of displacement time graph is velocity. If the velocity is 0, gradient is 0, horizontal line. ठीक है? If a velocity is infinite, gradient is vertical line, infinite gradient. ठीक है? If the velocity is uniform, gradient is uniform straight line. If a body velocity is increasing, gradient keeps on increasing. If a velocity is decreasing, gradient keeps on decreasing. ठीक है? So through the eye of gradient, we will see the displacement time graph. So now let's start. First of all, we have a graph, which is what we call body at rest. That means velocity is 0. Once again, मेरे साथ साथ बोले, displacement time graph का gradient क्या है? Velocity. Velocity. If the gradient is 0, velocity is 0. So gradient 0 कब होता है? When we have And the line is horizontal. horizontal line. So there are two classes of showing the line to be horizontal. One is this, and the other is this. Okay? Now, for example, let me explain this. This is my position. और इस पोजीशन पे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है? और इसी पोजीशन पे खड़े खड़े मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी. टाइम गुजर जा रहा है. आई एम एट माई स्टार्टिंग पोजीशन. आई एम एट रेस्ट. ये ग्राफ 1 है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ नंबर 2. मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा आगे आ गया. ठीक है? और वो मेरी ओरिजिनल पोजीशन थी पीछे वाली. मैं आगे आ गया हूं. आगे आने के बाद नाउ आई स्टार्टेड द स्टॉप वॉच. अब भी तो मैं रेस्ट में हूं, अभी भी तो रुका हुआ हूं. सो दैट इज हाउ मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूं. ठीक है बेटा? इफ यू हैव डिस्प्लेस्ड फ्रॉम योर स्टार्टिंग पोजीशन एंड देन यू स्टार्टेड द स्टॉप वॉच, स्टिल यू आर एट रेस्ट, दैट मीन्स आपका ग्राफ ऐसा होगा. एंड इफ यू आर एट, और आसान तरीके से समझाता हूं, 6:30 a.m. in the morning, I wake up. I'm at my home. I'm at rest. This is my graph. I move to the first affiliation of the day, and then I go there and I sit on my desk. और उसके बाद मैं स्टॉप वॉच ऑन करता हूं, तो आई एम एट दिस ग्राफ. दोनों ग्राफ्स में आई एम एट रेस्ट, बट मेरी स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इस ग्राफ में. अंडरस्टूड? So this is the basic difference between these two graphs. Both are telling you that the body is at rest, but both are having the same circumstances of displacement. Understood? Yes, sir. जी सर. Okay. Now, uniform velocity. If the velocity is uniform, gradient should be uniform. And uniform gradient is straight line. Straight. Single gradient is straight line. Increasing velocity, that means gradient is increasing. And by the passage of time, your graph is getting steeper and steeper, like this. Okay? So see, less steep, steeper, steepest. Decreasing velocity, that means by the passage of time, your graph gradient is decreasing. Since the displacement time graph have a gradient velocity, so velocity is decreasing like this. See, steepest, less steep, least steep. So that is how you can have the displacement time graphs. ये हम लोगों ने 3 से 4 से 5 सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को डील कर लिया. कॉपी डाउन कर लें.
and Parvez in the class. Parva. Shiva. सर फरवरी से पूछिएगा why she is not taking the classes. वालेकुम अस्सलाम सज्जाद. ओके अफीफा. ओके, लेट्स मूव अहेड. तो ये तो हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गए. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट्स कंफ्यूज्ड. हाँ भाई सज्जाद, why you are not taking classes? Oh, how are you now? आप कैसी तबीयत है आपकी? गुड. जी रुबिया, जल्दी से कॉपी कर लो. Let me know when you are done so that we can move ahead. Okay, chalo. Cool. So most of the time a student gets confused between the transition of the graph. तो मैं आपको हर मसले का एक हल बताता हूँ. 5 problems, 1 solution. ये तो आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना ही होता. But now I'm giving you the actual solution of motion graphs. That is gradient. सही? Yeah, head and shoulder. So gradient को माइंड में रखते हुए आगे चलें. आपके सारे मसले हल होंगे मोशन ग्राफ्स के. चलो अब देखें. So as we start velocity time graph, यहाँ पे भी देखें मैंने पहली डिस्कशन रखी ही ग्रेडियंट की. तो y2 minus y1 or x2 minus x1. Here on y-axis we have velocity. Here on x-axis we have time. The change in velocity over change in time is what you call acceleration. Yani the velocity time graph gives us gradient as acceleration. ठीक है? तो हम अब हर तरह के ग्राफ को through the eye of gradient, that is acceleration, डील करेंगे. ओके बेटा? Cool. अच्छा, one more thing I want to ask you all if you are comfortable with it. यार ये हमारी बड़ी छोटी सी प्यारी सी रील है जो बड़ी पसंद की जा रही है गिरदोनवा में. And if you look at the insights, every minute the reach is increasing and increasing. So थोड़ा सा और इसको बूस्ट कर दें ताकि लोगों को पता चले किस लेवल पे काम हो रहा है, किस लेवल पे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है. 9,844 plays. Wow. Cool. So it's on the Physics Unleashed. And ये वाली जो आईडी है ना हमारी फिजिक्स वाली, ये इस पे. तो इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, शेयर कर दो. ठीक है? दिल से दुआ निकलेगी. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जब आप बात करते हैं तो देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स जो एग्जामिनर ने हमें ऑलरेडी बताई दी हैं. चले इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं. बॉडी एट रेस्ट यानी वेलोसिटी 0. एंड अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी
0 है, ठीक है. That means we'll draw the graph like this. I have to show दो काम है यहाँ पे. One, I have to show velocity being 0. तो velocity is along y-axis. 0 की वैल्यू कहां पर होगी? यहाँ पर. Second, the gradient of velocity time graph is acceleration. I have to show the gradient that is acceleration is also 0. उसको मैं कैसे शो कर रहा हूं? हॉरिजॉन्टल लाइन बना के, ठीक है, जैसे यहाँ पे बनाई गई है. क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हैज ग्रेडियंट इक्वल्स टू 0. दैट मींस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. Cool. बराबर वाले ग्राफ is talking about uniform velocity. That means अब मुझे exactly x axis पे ग्राफ नहीं बनाना होगा. Our velocity is uniform. That means कुछ ना कुछ velocity से तो travel कर रही है body. But still, when the velocity is uniform, the velocity is not changing. And acceleration is the change in velocity with respect to time. When there is no change in velocity, there will be no acceleration. And since the gradient of velocity time graph is acceleration, so I have to show the graph will be having 0 acceleration. So horizontal line बनाएंगे, but not exactly on x-axis, जरा सा ऊपर. Yeah, it's up to you. आप कहीं पे बनाएं, आपको अभी सिर्फ shape of the graph दिखानी है. So that is how I have to show velocity uniform है तो acceleration 0 है तो horizontal line बनाई. But since the velocity is uniform, तो exactly x-axis पे नहीं बनाई, थोड़ा सा ऊपर बनाई. ठीक है जी. मान horizontal line on y-axis. भाई ईमान बहुत हाई लेवल की आर्टिस्ट है. इनकी स्नैप्स कुछ मेरे पास रखी हुई हैं. अभी मैं इंस्टाग्राम पे उन्हें पोस्ट करूंगा, उन्हें जरूर फॉलो करिएगा. सारे टैलेंटेड बच्चे माशाल्लाह हमारे हिस्से में रखे हुए हैं. सर मैं भी आपको एक चीज भेजता हूँ, आप भी इसको कर दीजिएगा. मैं अगर दीजिए आपने यार. सुना हो रेसिटेशन, मैं आपको भेज दूंगा. श्योर आप भी वो श्योर कर दीजिएगा. श्योर. यार सजाद, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ही तो हैं. तो if one of my student is starting a business, they know I'll be the first customer. तो मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ. है ओके शायद. यस. डन हो गया सर. अब तो आपको बाय करना पड़ेगा. हाँ शायद ये मुझे इंस्टा पे सेंड करो, क्योंकि यहाँ पे ये तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल ओपन नहीं होगा. चले आगे बढ़ते हैं. कोई बात नहीं. whenever I come Dubai, I'll contact you Sajjad. Then I'll be your customer, whatever you are having business with. Okay. चले बेटा. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? हमारे पास ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म. सही है. दैट मीन्स जब एक्सेलरेशन हम बोलते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो स्ट्रेट सिंगल ग्रेडियंट लाइन. ठीक है. शुक्रिया मतुल, शुक्रिया फीफा. Cool. Now let's move ahead. Now here we are talking about increasing acceleration. तो increasing acceleration का मतलब क्या होता है? Acceleration is increasing, and if you're talking about acceleration, velocity is also increasing. ठीक है. So velocity is along y-axis, it keeps on increasing. तो मुझे अपना ग्राफ ऊपर की तरफ लेकर जाना है. But the same way, I have to show the gradient is also increasing. So I have to show an upward curve. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा.
If the curve is smooth, the change is uniform. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे जरा गौर से सुनिएगा. अगर हमारा कर्व स्मूथ है तो ग्रेडियंट का जो चेंज है वो भी यूनिफॉर्म है. मतलब लेट्स से हियर द ग्रेडियंट वाज 2, हियर द ग्रेडियंट इज 4, 6, 8, यानी यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. Now, decreasing acceleration. Here still you are talking about what? Acceleration. Yani velocity will be increased, but the gradient will be decreased. Okay. क्या बोल रहे हैं? Decreasing acceleration. So acceleration बोला है will still move upward, but through the passage of time, the gradient will be less and less. Yani like this. ठीक है. देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट टाइम के साथ साथ स्टीपर हो रहा था, यहाँ पे ग्रेडियंट लेस स्टीप हो रहा है, बट स्टिल द ग्राफ दोनों वाई एक्सिस पे ऊपर ही जा रहे हैं. ठीक है. चलें देखते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास देखते हैं. Okay, now we have uniform deceleration. Now we are talking about officially the negative acceleration. So here they are saying uniform deceleration. How do you think I should draw the graph for uniform deceleration? Line It will be a going straight. downwards. जी बेटा, repeat करेंगी? I was saying the same thing. Okay. It will be straight line going from up to down. Yes, somewhat like this. A straight line down from more velocity. Yes. Decreasing deceleration. We are talking about deceleration. That means we have to decrease the velocity. तो हमारा ग्राफ जाएगा downward. Increasing deceleration का मतलब क्या है? The gradient will get steeper and steeper. मतलब somewhat like this. So here, less steeper, more steeper, most steeper. ठीक है? It's uniform, so it will be straight line, right? No. This one, straight line. Yes, Subia. Okay. Decreasing deceleration. So deceleration का मतलब है we have to decrease the velocity. But here हमारा gradient भी decrease होगा. Somewhat like this. ठीक है? Steepest, less steep, least steep. And once again, I'm telling you, if the gradient, graph is a smooth curve, the change is uniform. Like, for example, this is uniform increase in velocity. That means you're talking about uniform acceleration. This is uniform decrease in velocity. You're talking about uniform deceleration. Okay? It was going to be opposite for both. Okay, let's break down into two chunks of IFA. Step 1, deceleration. That means along y-axis, we have to decrease the velocity. Okay? 1. The second is increasing deceleration. Since the gradient of velocity time graph is acceleration, so we have to increase the
steepness of the graph from the time goes on. So less steep, more steep, highest steep यहां पर मिल रही है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन मतलब वेलोसिटी कम होगी बट नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी नेगेटिव ग्रेडियंट keeps on increasing. Similarly here velocity will decrease, you will move down, but negative gradient will also decrease. So most steep, less steep, least steep. Okay. Okay. तो इस तरह हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की यहाँ एक 10 seconds. जी आयान, increasing deceleration is more deceleration. मैं चाय लेने गया था, आपको पीनी है? ओके, चले आगे बढ़ते हैं. यार आई यूज्ड टू बी कॉफी वाला बंदा until I lost my gallbladder. Gallbladder ना होने के नुकसानात that you cannot have pure coffee. ओके, अब आ रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. तो स्टूडेंट पूछता है सर पिछले दो ग्राफ में आपने ग्रेडियंट की कैलकुलेशन दिखाई. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हैड अ ग्रेडियंट velocity time graph had a gradient acceleration, but why we are not discussing gradient in acceleration time graph? So my answer is कोई क्वांटिटी नहीं बनती. velocity time graph में acceleration gradient बन रहा था, displacement time graph में velocity gradient बन रहा था, but acceleration upon time is not any, it does not make any quantity. That is why मैं इसका gradient यहाँ पर क्वांटिटी वाइज आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा. सही है, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है. जीरो एक्सेलरेशन, we have acceleration along y-axis. So how the graph will be? We have to show the acceleration is zero. That means we have to show like this. ठीक है? Uniform acceleration. Acceleration is along y-axis. We have to show no change in acceleration. Only like this. Increasing acceleration. So if the increasing acceleration is uniform, मतलब हर सेकंड में बॉडी की एक्सेलरेशन सेम अमाउंट की इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रहा था, देख रहे हैं स्मूथ अपवर्ड कर्व. तो इन दैट केस वी ड्रॉ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन लाइक दिस. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात हो रही है. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसे होगी बेटा? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मूथ decreasing curve like this, then you are talking about decreasing acceleration, sorry, like this. सही है?
Yes, so when sir. you talk about acceleration, आपने x एक्सिस के ऊपर रहना है. ये पॉजिटिव x एक्सिस है और पॉजिटिव y एक्सिस. ठीक है. But now we are moving towards deceleration. So we have to now move on negative y-axis. तो ये आ गया नेगेटिव पार्ट. ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है. यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन तो हम कैसे बनाएंगे? y-axis पे एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन. इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन मतलब the acceleration is getting more and more negative. I mean, like this. Decreasing deceleration, the deceleration is getting positive. यानी उसकी negativity. Deceleration is decreasing, यानी negativity is decreasing. Somewhat like this. Less negative, less negative, less negative. ठीक है बेटा? That is how we have our acceleration time graphs. Last three, okay. बेटा last three देखें रहा. यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू टॉक अबाउट द नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन इज अलोंग बाय एक्सिस. दिस पार्ट इज पॉजिटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव. तो दैट इज बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन. तो मुझे अलोंग वाई एक्सिस कोई चेंज शो नहीं करना है. तो आई हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. सिंस इट्स डिसेलेरेशन आई हैव टू ड्रॉ इन द नेगेटिव एक्सिस. सही है. नेक्स्ट इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन. डिसेलेरेशन बोल दिया है तो आई हैव टू बी एट द नेगेटिव सेक्शन. इंक्रीजिंग डिसेलेरेशन that means that the negative deceleration is getting more and more negative through the passage of time. देखें negative, more negative, more negative, more negative. सही है. Similarly, still we are talking about deceleration. I'll be at the negative section. And decreasing deceleration, यानी the negativity is decreasing. Graph is getting less and less negative. सही रहा. Yes, sir. Thank you so much. ये ब्लैक लाइन क्यों बनी हुई है पहले से ग्राफ में? बेटा दैट ब्लैक लाइन इज बेसिकली शोइंग जीरो. ठीक है. जीरो से ऊपर पॉजिटिव है, जीरो से नीचे नेगेटिव है. ओके. इसे जल्दी से आप लोग कॉपी कर लें. देन मैं आपको कंपैरिजन की तरफ लेके जाता हूँ. Cool. So now we'll compare how the body at rest graph looks for a velocity time graph, displacement time graph, acceleration time graph. How that graph looks for यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, तमाम बातें करते हैं. तो चलो कंपैरिजन ऑफ मोशन ग्राफ्स. पहला हम बात कर रहे हैं मोशन ग्राफ्स के बारे में एट रेस्ट, यानी योर बॉडी इज एट रेस्ट. इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या है?
velocity is zero. Velocity zero है तो acceleration भी zero है. In that way, displacement time graph का gradient क्या होता है जल्दी बताएं. Area under the Velocity. graph. Displacement time graph का gradient, it's velocity. Sorry. So velocity, that means you have to show what? You have to show the gradient to be zero. तो horizontal line बनाएंगे. ठीक है, ये नीचे भी बना सकते हैं और ये ऊपर भी बना सकते हैं. ठीक है, दोनों ग्राफ बिल्कुल ठीक है. Here we are just working on the shape. Now, velocity time graph has a gradient acceleration. तो अगर velocity zero है तो gradient acceleration भी zero होगा. तो velocity zero शो किया horizontal axis पे बनाकर, क्योंकि यहाँ पे velocity zero है, और gradient शो किया zero horizontal line बनाकर. ठीक है. Similarly, if the acceleration zero, here acceleration is along y-axis, तो acceleration zero है, तो again horizontal x-axis पे straight line बनेगी. तो बेटा तीनों ग्राफ में हम लोगों ने बॉडी एट रेस्ट का कंपैरिजन देख लिया. डन. जी सर. Now let's talk about uniform velocity. Uniform velocity का मतलब क्या है? Acceleration will be zero. Body is not changing its velocity. So uniform velocity, displacement time has gradient velocity, so the graph will be uniform like this. Now, if the velocity is uniform, as I told you, acceleration is zero. What do we have to do? We have to draw the graph. But first tell me, velocity time graph का gradient क्या होता है? Acceleration. Acceleration. We'll show horizontal line just to show the acceleration is zero. And we should not draw the line on the horizontal axis. Like this. And if the acceleration is zero, it's zero here. We'll draw the graph like this. Okay. Uniform acceleration. So, इस पे opposite चलते हैं. Uniform acceleration मतलब acceleration along y-axis. You should not show any change along y-axis. Like this. Velocity time graph has gradient acceleration. Uniform acceleration means uniform gradient straight line. What do you mean by uniform acceleration? मतलब the velocity of the body is increasing uniformly. यानी हर सेकंड बॉडी की वेलोसिटी सेम अमाउंट इंक्रीज हो रही है. और मैंने आपको क्या बताया? Whenever you show the increment by same amount or the decrement by same amount, draw smooth curve, and that is this. Uniform acceleration means velocity is increasing uniformly. So they can, the gradient is also increasing.
यूनिफॉर्मली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा भाई, अब आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। तो इसको भी ऑपोजिट लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेगेटिव एक्सिस में हमने यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। ठीक है, देन यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, वेलोसिटी शुड बी डिक्रीजिंग। सही है भाई? तो वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए कैसे दिखाएंगे? यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन है ना, यानी we have to show like this. Let me see. Iman is saying uniform deceleration, displacement time less steep curve. Okay. Velocity time straight line running downward. ठीक horizontal line negative axis. Perfect Iman. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? Somewhat like this, है ना? एक मिनट, velocity is decreasing. Just a minute. It should be like this. Velocity is decreasing. That means the gradient is decreasing. ठीक है बेटा? Okay, let's move ahead. Acceleration at increasing rate, मतलब acceleration with respect to time बढ़ रही है। Yes, मुबश्शिर? सर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का डिक्रीजिंग वेलोसिटी वाला नहीं होगा फॉर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम? Displacement time graph decreasing velocity तो है, the gradient is decreasing, that means the velocity is decreasing. ठीक है, less steep हो रहा है हमारा gradient. बट सर इन द graphs for the distance time we made decreasing velocity like go up and then down Go up and then down. Where? at that top. Like this one? Yeah. Okay, okay. अच्छा अच्छा, I understood, I understood. Okay, okay, okay. ऐसे करेंगे। चलिए, thank you. Velocity is decreasing. यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन, एक मिनट रुक, यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का मतलब क्या है?
Initially, the velocity is greater, and through the passage of time, हमारे पास velocity कम हो रही है. तो या सही है, ये भी है. Acceleration at increasing rate. कैसे होगा बेटा? Acceleration at increasing rate. पहले तो यहाँ पे बना है acceleration at increasing rate somewhat like this. ठीक है? And here अगर acceleration बढ़ रही है तो increase अगर smooth है, यूनिफॉर्म है, increase तो स्मूथ कर्व बनेगा like this. इसी तरह डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में क्या होगा? ऐसा ग्राफ बनेगा और यहाँ पे we'll talk like this. It's getting less steeper. Similarly, increasing deceleration at increasing rate, and your graph is getting more and more negative. You go like this in acceleration time graph. And in velocity time graph, you go like this. हमारा ग्राफ टाइम के साथ साथ नीचे आते हुए स्टीपर हो रहा है. That means the gradient, negative gradient, is getting steeper. That means it is getting increasing. And finally, deceleration at decreasing rate would be like this. ठीक है? And that means हमारा ग्राफ नीचे आएगा बट टाइम के साथ साथ लेस स्टीप होता जाएगा. ठीक है बेटा? So these are the remaining 4 graphs. तो प्लीज मेरा पेज शो कर दें. अभी कर रहे हो? बस अभी कॉपी कर लें फिर अभी करते हैं. कौन सी आईडी पे मैसेज किया? पर्सनल आईडी पे या फिर फिजिक्स वाली आईडी पे? ओके. चलो देखते हैं शायद तुम्हारा पेज. क्या बात है भाई. अच्छी फोटोग्राफी कर रहे हो. मेरा एक स्टूडेंट है असद इलियास. उसने बचपन से फोटोग्राफी करना शुरू की थी. नाउ ही इज अ प्रोफेशनल फिल्म मेकर. वो कनाडा में प्रोफेशनल लेवल पे फिल्म मेकिंग कर रहा है. आई मीन पढ़ नहीं रहा है, शायद पढ़ भी रहा है, लेकिन मल्टीपल फिल्म्स को शूट कर रहा है वो राइट नाउ. गुड. क्या बात है. सर मैं भी आपको अपना भेज दूं? जी जी बेटा, मुझे आप लोग पर्सनल आईडी पे सेंड कर दें तो वहां पे मैं फॉलो कर सकता हूँ.
लास्ट वाला ग्राफ देखा दें, ये ले। Let's see what AI is telling me. Oh, मैंने एक सी ज्यादा लगाया है, इससे बेहतर तो मैं खुद मिटा दूं। गंदी राइटिंग कर दी एआई ने। कूल सर, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस ऊपर होगा, जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस ऊपर होगा, मतलब जो भी है समझा नहीं। कैन यू एक्सप्लेन बाय switching on your microphone what you want to ask? जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस ऊपर होगा। नो, देखें, आई गेस दोनों सिचुएशन डिफरेंट है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप पॉजिटिव एक्सिस में खेलेंगे। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसेलरेशन, तो आप नेगेटिव एक्सिस में खेलेंगे। ये पॉजिटिव है, ठीक है। सिमिलरली हियर ये पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, do we have? Okay, perfect. So yeah, तो आज की क्लास में we just covered motion graphs, displacement time graph, velocity time graph, acceleration time graph, the comparison between the motion graphs, ये तमाम चीजें हमने कवर की हैं। So अशबार नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद विल गो टूवर्ड्स सम पास्ट पेपर्स में भी, ठीक है। So this is it, beta. I enjoyed the class. I was unable to submit section 3 homework. Can I submit? Yeah, you can. Talha. Okay. तो इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Sir. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर अभी इंस्टाग्राम पर आप ऑनलाइन होंगे? जी बेटा, अभी आप इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन होंगे? हाँ थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद। डन हो गया, मैंने भेज दिया। ठीक है।